हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू आवर लास्ट टॉपिक ऑफ राइट टू प्राइवेसी। आज हम बात करेंगे डेटा प्रोटेक्शन बिल के बारे में। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, दिस इज इट दिस डिसाइड्स हाउ राइट टू प्राइवेसी विल सॉर्ट ऑफ इवॉल्व इन इंडिया इन द फ्यूचर। इसी डेटा प्रोटेक्शन बिल से हमको पता चल जाएगा कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म्स हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डेटा एग्रीगेटर्स हैं, वो हमारा डेटा यूज़ कैसे करेंगे और हमको किस टाइप की प्राइवेसी प्रोवाइड की जाएगी व्हेन इट कम्स टू आवर ओन पर्सनल डेटा। ये जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, मैं इसके दो वीडियोस बनाऊंगा। पहले वीडियो में हम बात कर लेंगे एप्लीकेबिलिटी के बारे में, हाउ द पीपल हु आर कलेक्टिंग आर डेटा, उनके क्या ऑब्लिगेशंस होते हैं, हमारा एज अ कंज्यूमर हु आर प्रोवाइडिंग आर डेटा, हमारे क्या राइट्स होते हैं। एंड अगले वीडियो में आई विल कवर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी क्या होता है, द अथॉरिटी दैट विल बी सेट अप अंडर द डेटा प्रोटेक्शन बिल। हम और ये भी बात करेंगे कि जो क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा होगा उसको कैसे हैंडल किया जा रहा है डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर। हम ये भी बात करेंगे कि जो हमारे एग्जेम्पशंस और फाइन्स वगैरह लगते हैं डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंडर, एंड ऑल दी अदर रिलेटेड इंटरवेंशंस। सो these two-part videos will give you an in-depth knowledge of the data protection bill itself. So let's jump right into the class. So डेटा प्रोटेक्शन बिल की शुरुआत होती है जस्टिस BN श्री कृष्णा कमेटी से, जिन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया, जिनको कंस्टिट्यूट किया गया था 2017 में। उन्होंने अपना रिपोर्ट प्रेजेंट किया था 2018 में। इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के मिनिस्टर ने 2019 में डेटा प्रोटेक्शन बिल प्रेजेंट किया था पार्लियामेंट में, एंड देन इस बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया था। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2021 दिसंबर में इसका फाइनल ड्राफ्ट निकाला, और उस फाइनल ड्राफ्ट में इस फाइनल ड्राफ्ट को प्रेजेंट किया गया है। एंड इस फाइनल ड्राफ्ट के बेसिस पे आज हम ये वीडियो बनाएंगे। ये फाइनल ड्राफ्ट which is now being presented, when it becomes the law, will completely define everything that has to do with privacy as well as personal data. ठीक है, तो फाइनली जब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत सारे स्टेक होल्डर्स वगैरह के साथ मीटिंग करके जो फाइनल ड्राफ्ट बनाया, उन्होंने बात की कि पर्सनल डेटा क्या होता है। अब पर्सनल डेटा, द डेटा प्रोटेक्शन बिल सेज कि इट कैन बी एनी डेटा दैट कैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आइडेंटिफाई हु यू आर। कोई भी डेटा जो आपकी पहचान कर सके, चाहे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इज गोइंग टू बी योर पर्सनल डेटा। एंड देन इट ऑल्सो सेज, इट एड्स टू दैट लेयर बाय सेइंग दैट इट कैन ऑल्सो बी द डेटा फ्रॉम वेयर इन्फ्रेंसेस कैन बी ड्रॉन टू प्रोफाइल यू। ये जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि जो डेटा ब्रोकर्स होते हैं वो आपका इन्फॉर्मेशन लेते हैं, आपकी एज, आपकी प्रेफरेंसेस, आपकी सर्च रिजल्ट्स, ये सब लेके एक प्रोफाइल बनाते हैं, और फिर उसके ऊपर टारगेटेड एड्स भेजते हैं आपके ऊपर, क्योंकि उनको पता है कि अच्छा आपको इंटरेस्ट ही इन्हीं चीज़ का है, तो हमको ऐड ही आपको उन चीज़ों के दिखाने हैं जो आप खरीदेंगे। सो उसको प्रोफाइलिंग बोलते हैं। सो जो डेटा हमारा जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है, दैट कवर्स in personal data that all the information that can be drawn for profiling also. So ये जो data broker use कर रहे हैं, this is also going to come under personal data. And then it goes ahead and makes another category of sensitive personal data. अब sensitive personal data क्या है? जो data protection bill है वो ये कहता है कि sensitive personal data is going to be one threshold above personal data. ये it is not only about identification of who you are, बट इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज मोर डिटेल्स अबाउट यू। तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं? इसके अंदर आ सकता है आपका इनकम डेटा और फाइनेंशियल डेटा। इसके अंदर आ सकता है आपका हेल्थ डेटा, हेल्थ रिलेटेड डेटा। इसके अंदर आ सकता है आपका जेंडर रिलेटेड डेटा और जेंडर, जेनेटिक्स, इंटरसेक्स, ट्रांसजेंडर, ऑल दीज डेटास। इसके अंदर आ सकता है कास्ट एंड रिलीजन, tribes. It can, like, if you belong to a particular tribe, you belong to a particular caste, if you follow a particular religion, your political opinion, सब कुछ, all of this which is going beyond just identifying and also telling your own preferences is going to come under sensitive personal data. And data protection bill ये भी बोलता है कि ये जो लिस्ट है ना, this is not an exhaustive list. इस लिस्ट के अंदर चीज़ें ऐड होती रहेंगी as the time develops, right? Now that when it comes to the applicability of the data protection bill, it says that processing of this personal data that we just spoke about, processing of personal data that has been collected, disclosed, shared, or otherwise processed in India
or to the processing of personal data by the state or state bodies, Indian corporate entities, and Indian citizens. All of these come under the purview of Data Protection Bill. So, ये सारा, all the entities that are collecting and processing your personal data are going to come under the purview of Data Protection Bill. And now, the important part here is that it is not only about entities that are in India, it is also going to consider entities outside India that are processing your data they are processing the data of an Indian citizen, they'll still be considered under the Data Protection Bill. अब entities outside India का मतलब ये है कि जो entities which are registered outside India, so for example Facebook, Uber, Tesla, all these companies, even Instagram, Snapchat, all of these are entities that are based outside India, and yet they have so many Indians who are using their services. So all of these platforms will also come under the purview of Data Protection Bill under our own Indian law. And then this is another peculiar thing that was added. ये जो हमारा पूरा process होता है ना, where the committee gives a report, then a law is made, and then that law is then preferred to a law is tabled, and then that law is then referred to the Joint Parliamentary Committee. And when it's referred to the Joint Parliamentary Committee, the Joint Parliamentary Committee sits with a lot of stakeholders, be it from the information processing side or be it from the legal side. And वो बैठ के बहुत सारे ड्राफ्ट्स निकालते हैं. जो फाइनल ड्राफ्ट आता है उस फाइनल ड्राफ्ट के हिसाब से जो नया लॉ, उसके हिसाब से नया लॉ बनता है. तो इसके फाइनल ड्राफ्ट में they added this particular thing. They said that the Data Protection Bill is also going to consider non-personal data. ये इससे पहले किसी भी ड्राफ्ट में नहीं था. ये इन्होंने इसलिए इसमें इस वजह से डाला. अच्छा, पहले हम देख लेते हैं नॉन पर्सनल डेटा होता क्या है. नॉन पर्सनल डेटा इज एनी डेटा दैट कैन नॉट बी रिट्रेस्ड बैक टू द डेटा प्रिंसिपल और द यूजर. मतलब अगर मैंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है और उस इन्फॉर्मेशन को मेरे तक ट्रेस बैक नहीं किया जा सकता, तो वो नॉन पर्सनल डेटा बन जाता है. अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस इज यूपीएससी मेंस में जब आप पेपर देते हैं, वहाँ पे आप अपना रोल नंबर लिखते हैं, वहाँ पे आप अपना पेपर का कोड लिखते हैं, आंसर शीट का कोड, क्वेश्चन पेपर का कोड लिखते हैं, क्वेश्चन पेपर का नाम लिखते हैं, बट अपना नाम नहीं लिखते हैं. इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर है, एग्जामिनर को नहीं पता चलता कि ये द पर्सन हु इज गिवन दिस एग्जाम, हु इज रिटन दिस पेपर, ये है कौन. द सेम थिंग हैपन्स विथ एनोनिमाइजेशन. ये जो एनक्रिप्शन करके हम ये जो कड़ी ब्रेक कर देते हैं, वेयर here you are who has provided the data and here is the data and this cannot be traced back to you, then it becomes non-personal data. इस प्रोसेस को बोला जाता है एनोनिमाइजेशन. एनोनिमस जो वर्ड होता है उसी से एनोनिमाइजेशन आया. एंड ये एनोनिमाइजेशन के डिफरेंट डिग्रीज होती हैं, डिफरेंट इंक्रिप्शन लेवल्स होते हैं. एंड ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा डीपीए, द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी. Data Protection Authority is going to be an authority, statutory body that is going to be constituted under the Data Protection Bill. इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे. बट आप ये जान लीजिए कि ये जो डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी है, दिस इज द की अथॉरिटी, द मेन हेड बॉडी which will decide everything that is going to affect your own personal data. So this is the body which also decides कि जो non personal data है ये कितना anonymize किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वगैरह वगैरह. ठीक है. Now let's come to the key obligations of data fiduciaries. अच्छा, उससे पहले एक बार अब बात कर लेते हैं ये डेटा फिड्यूशियरी और डेटा प्रिंसिपल चीज़ क्या है. बिकॉज आप जब भी देखेंगे हम राइट टू प्राइवेसी की बात करते हैं या डिजिटल प्राइवेसी की बात करते हैं या कहीं पे भी डेटा प्रोटेक्शन की बात करते हैं, ये डेटा फिड्यूशियरी वर्ड बहुत ज़्यादा यूज होता है. सो अ वेरी सिंपल डेफिनेशन, अ वेरी सिंपल वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट अ डेटा फिड्यूशियरी is that it is going to be any state, corporate entity or individual which collects, discloses, shares or processes your personal data. Right? It is any body which is taking your data and processing it for further use. That is a data fiduciary, anyone who is collecting your data. And data principal कौन है? Data principal is you who is providing the data. The customer who is giving the data is the data principal. These are the two terms that will keep recurring in the data protection bill or anything related to the data protection bill. ये जो data fiduciary word है, ये सबसे पहली बार BN श्रीकृष्णा कमेटी के रिपोर्ट में यूज किया गया था. उसी को लेते हुए because हमने देखा कि that became the fundamental core of the data protection bill, right? So now we look at the key obligations of the data fiduciary, people who are collecting our data. Now the first obligation is notice.
It says that the data fiduciary needs to provide a notice which says कि ये जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है इसका कलेक्ट करने का पर्पस क्या है, ये जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है ये किस हिसाब से कलेक्ट किया जा रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द डेटा बीइंग कलेक्टेड. नेचर में आ जाता है हाउ सेंसिटिव इट इज, what sort of a data is it? Is it a financial data? Is it a health data? So that's the nature of data. The identity of the data fiduciary himself, कि मेरा जो डेटा कलेक्ट कर रहा है कौन, किसके पास फाइनली जा रहा है ये डेटा. एंड ये सारी चीज़ें जानने का राइट्स, मेरे अपने राइट्स एज अ पर्सन हु इज गिविंग माई डेटा, एज अ डेटा प्रिंसिपल, व्हाट आर द राइट्स दैट आई हैव, एंड हाउ लॉन्ग विल द डेटा फिड्यूशरी कीप माई डेटा. ये सारी चीज़ें डेटा फिड्यूशरी को मुझे बतानी है इन अ ईजी फॉर्मेट, इन अ ईजी टू अंडरस्टैंड, ईजी टू कॉम्प्रिहेंड फॉर्मेट. एंड इसके लिए डेटा प्रोटेक्शन बिल ये भी बोलता है कि everyone doesn't understand English, so at least have provisions where you can give this in multiple or regional languages. There are 22 scheduled languages, so you should provide, the data fiduciary should be able to provide this in languages which are understandable, easy to comprehend and understandable by the data principal himself. So first thing is notice. Second is purpose limitation and collection limitation. जैसे ही बात लिमिटेशन की आती है, यहाँ पे the data protection bill gives the power to your hand. It says ये जो डेटा लिया जा रहा है, जो कलेक्ट हो रहा है, जो प्रोसेस हो रहा है, ये तभी होगा जब आप कंसेंट देंगे. आप बोलेंगे कि हाँ, आई एम अलाउइंग द डेटा फिड्यूशरी टू टेक माई डेटा, आई एम गिविंग देम द कंसेंट, आई एम अलाउइंग देम. एंड द डेटा प्रोटेक्शन बिल सेज दैट इट शुड बी the process of giving consent should be as easy as it is to withdraw the consent. So देना और लेना, consent देना और लेना should be very easy, because that is the core concept of our data protection bill. You can take my data only when I'm allowing. Obviously there are exceptions, but you can take my data only when I'm allowing. And वो exceptions भी हैं, जो exceptions हैं उसमें क्या बोलते हैं, उसमें the purpose limitation and collection clause says that the state can take data without your consent in certain cases. Not just the state, but your data can be collected in certain cases without your consent, where, for example, provision for the providing of services benefit by the state. अगर state आपको कोई particular benefit provide कर रहा है, उसके लिए हो सकता है for your consent might not be the key thing here, because you are going to the state for your own benefit. Then again, issuance of certification, license or permit from the state, because again that is an identifiable document, that is a document made by law, so there could be certain obligations that the state has to follow, जिनके लिए आपका consent लेना ज़रूरी नहीं हो सकता है. अब इसमें वो भी conditions आ जाते हैं, cases आ जाते हैं where there is an emergency. There's an emergency to a public order, there is a natural disaster, there's a medical emergency. So in these cases, because it's a situation of life and death, in that situation also, taking your consent prior to doing something helpful might not be the right way to go about it. अच्छा, इसमें एक और चीज़ आ जाती है, जो है कि अगर मान लो a person is involved in a fraud, or a person is involved in certain financial transactions, or the data is already available in the public domain, and there are certain other exemptions under this data protection bill given by law, जिन सबके लिए बिना consent के भी data लिया जा सकता है. So yes, consent is the major for all the data that you're providing. All of it will be taken with your consent, except certain exceptions जो यहाँ दिए गए हैं. अच्छा, यहाँ पे एक और word है, वो है conditional. This is very important because the data protection bill says कि अगर आपको एक कंपनी कोई goods या service provide कर रही है, they can't say that I can only give you goods and services to the optimum quality only if you give me consent. ये कंडीशन नहीं लगा सकते हैं आपके कंसेंट के ऊपर. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आइसक्रीम खरीदने गया एंड आइसक्रीम वाले को मैंने बोला कि मुझे कॉफ़ी फ्लेवर आइसक्रीम चाहिए, द आइसक्रीम वेंडर इज आस्किंग फॉर माई नेम एंड नंबर फॉर द बिल. नाउ आई कैन डिनाई माई नेम एंड नंबर कम्प्लीटली. उनके गुड्स एंड सर्विसेज के लिए मुझे अपने नेम एंड नंबर देने की जरूरत नहीं. आई जस्ट नीड टू पे हिम. So in this case, if the ice cream person goes like, I'm not going to give you the ice cream unless until you give me my number. Here, this is them making conditional, their service is conditional on giving my consent for my data. ठीक है? And यहाँ पे it is not necessary, so I can deny it, and you can go forward and lodge a complaint to the data protection authority that this is what is happening, where because of my consent, these goods and services have been denied to me, right? So,
एंड देन फाइनली इसी के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज अ कंसेंट मैनेजर. जो कंसेंट मैनेजर का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही नॉवल कॉन्सेप्ट है. ये क्या है? ये बेसिकली कहता है कि बिटवीन यू एंड द पर्सन हु इज कलेक्टिंग योर डेटा, द डेटा फिड्यूशरी, देयर इज गोइंग टू बी अ कंसेंट मैनेजर. बिकॉज डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो आउटलाइन नहीं करता कि किस टाइप का कंसेंट होगा, कैसे कंसेंट दिया जाएगा, क्या किया जाएगा कंसेंट के साथ. उसके लिए दे आर गोइंग टू कॉन्स्टिट्यूट कंसेंट मैनेजर्स who are going to take consent from you and they are going to facilitate the providing of consent to the data fiduciary. इसमें बस इतना information काफ़ी है, but अगर there are further doubts that you have regarding consent manager, let me know. In the next video, I'll also cover consent managers in detail. Okay, so right now let's just move forward with the data protection bill itself. Now, the next thing is data quality. Data quality, very similar. In the last video, we spoke about GDPR. GDPR also had similar obligations to the data collecting authority, right? It said that data quality, वहाँ पे accuracy की बात की थी, यहाँ पे उसी चीज़ को data quality के हिसाब से लिखा गया है. इन्होंने data quality में बोला कि the data that is collected should be accurate, should be complete and should be up to date, so that there is no misinformation happening regarding the data that is collected. अगर I was working in a company in 2018 and now I've left the company, then all the places where this information is there, it should be updated that I have left the company. So my personal data should always be accurate, and the quality of data here, that means quality of data is basically accuracy. That data should be accurate, and this needs to be maintained as an obligation by the data fiduciary. Next is data storage limitation. Very easy to understand. It says that मेरा जो information data fiduciary ले रहा है वो उसी पर्पस तक उनके पास होना चाहिए जब तक उनको ज़रूरत है. Once that processing is done, once the use of my data is over, then they should not keep that data. They should not keep that data. So it says that the data storage should be done reasonably whenever, till the point that is necessary for providing that benefit to me, and it should be deleted once it is done. Once the service that was being provided to me by the fiduciary is done, my data should be deleted. See, already you can see how important the data protection bill is, because imagine all these things do not exist right now. है ना? Then comes privacy by design policy. Now, privacy by design policy is going to be one of those key areas under the data protection bill, which is going to define a standard. जो हमारा प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पॉलिसी है, एक स्टैंडर्ड, एक हॉलमार्क प्रेजेंट करता है डिफरेंट डेटा फिड्यूशरीज के लिए, एंड ये बोलता है कि आपके पास जो डेटा कलेक्शन सिस्टम है और डेटा प्रोटेक्शन सिस्टम है, इट शुड हैव अ सर्टेन स्टैंडर्ड, एंड दैट स्टैंडर्ड शुड बी डिफाइंड फ्रॉम द गेट गो. It should be defined from the get-go in accordance with the measures and compliances laid down by the data protection bill, so that कल जब कोई ब्रीच होने के भी चांसेस हो, आपके पास सारा कंडीशन हो टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पर्सनल डेटा ऑफ द कंज्यूमर, राइट? सो इट सेज वेरी इजीली दैट it should have, the data fiduciary should implement measures and safeguards to comply with the data protection bill's requirements and protect the individual's rights. Here, rights obviously meaning their right to privacy. For this, it further says that there going to be a data protection impact assessment. जैसे हमारा environmental impact assessment होता है, उसी तरह एक data protection impact assessment होगा, जो डिसाइड करेगा, वो एक रेटिंग देगा हर एक डेटा फिड्यूशरी को कि आपका जो वेबसाइट है वो कितना सिक्योर है, आपका जो स्टोरेज सिस्टम है, डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम है, वो कितना सिक्योर है. ये सब कुछ करने का एक ही मकसद है कि जब प्राइवेसी बाय डिज़ाइन पॉलिसी, मतलब कि अपने डिज़ाइन पॉलिसी में शुरू से ही प्राइवेसी लेके चलिए, क्योंकि कल जिससे कोई ऐसे ब्रीचेस ना हो, डेटा ब्रीचेस ना हो, जिससे इंडिविजुअल्स को और द डेटा प्रिंसिपल को कोई हार्म ना हो. सो एक स्टैंडर्ड मेंटेन करके चलना पड़ेगा हर डेटा फिड्यूशरी को, वेयर द प्राइवेसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस. देन कम्स ट्रांसपेरेंसी मेजर्स. वेरी इंपॉर्टेंट. इट सेज दैट ऑल ट्रांसपेरेंसी मेजर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर us as consumers, because the transparency tells us that ये जो डेटा फिड्यूशरी मेरे से जो डेटा कलेक्ट कर रहा है, वो क्यों कलेक्ट कर रहा है, किस पर्पस के लिए उनको चाहिए, कैसे कलेक्ट करेगा, मेरे राइट्स क्या है इस डेटा के ऊपर, ये मेरा जो डेटा है ये बाहर की कंट्रीज में जाएगा कि नहीं, एंड अगर मुझे कोई इश्यूज है इन सारी चीज़ों से, या फिर मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड की जा रही है,
the data fiduciary should have a grievance redressal mechanism, and इसका जो grievance redressal होगा, it should be directly connected to the data protection authority, right? And इन सारी चीज़ों का मुझे एक periodic update मिलता रहना चाहिए, because इससे क्या होगा? I am able to understand where my data is being used and how it is being used. I am also able to understand if I want to further let these people use my data, because how they want to use my data उसी पे डिपेंड करेगा मैं अपना कंसेंट दूंगा कि नहीं, है कि नहीं? सो इसी वजह से them being transparent on how my data is being used is very important. And again, DP says, the data protection bill says that ये जो आप information provide करेंगे ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से, प्लीज इसको इजी टू अंडरस्टैंड बनाइएगा, बिकॉज नॉर्मल लोगों को वरना पसंद पढ़ा ही नहीं जाएगा, उनको पता ही नहीं चलेगा कि इनके अपने राइट्स वगैरह क्या हैं. सो इट क्लियरली सेज दैट यू हैव टू प्रोवाइड ऑल दीज ट्रांसपेरेंसी मेजर्स व्हाइल मेकिंग इट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है. देन इट सेज सिक्योरिटी सेफगार्ड्स. Security safeguard says that you should have a level of encryption, a level of de-identification, and measures to prevent misuse, unauthorized access, modification, disclosure, or destruction of personal data. This is like a very easy to understand thing. If you're collecting personal data, then you should have a very robust security structure so that this data doesn't get leaked, right? And this security measures should keep getting reviewed periodically. अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं या फिर आप अगर iOS का फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं, आप देखेंगे उसके बाद उन एंड्रॉयड फ़ोन्स वगैरह में या iOS फ़ोन्स वगैरह में एक पीरियोडिक सिक्योरिटी अपडेट आता है. हर 3 महीने 4 महीने में एक सिक्योरिटी अपडेट आता है. ये क्यों आता है? बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप देयर होल स्ट्रक्चर वेरी रोबस्ट, जिससे हैक्स ना हो सके. वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि आपके जो सिक्योरिटी सेफगार्ड्स हैं, दे शुड बी पीरियोडिकली अपडेटेड, should be periodically reviewed, and should be very airtight. There should not be any scope of any breaches or leaks or hacks. ठीक है? And then in case there is a breach, in case after doing all of this there is a breach, then you should notify the data protection authority within 72 hours of such breach. Within 72 hours of such a breach, where what sort of a breach it is, what sort of information has been compromised, क्या क्या प्रॉब्लम आई है इस ब्रीच की वजह से, ये आपको डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को बताना होगा विद इन 72 आवर्स. एंड वहाँ पे डेटा प्रोटेक्शन बिल ये भी बोलता है कि जैसे जैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती जा रही है, आप वैसे वैसे डिस्क्लोज कीजिए, बट यू हैव टू डिस्क्लोज द फर्स्ट रिपोर्ट विद इन द 72 आवर्स ऑफ द ब्रीच. एंड देन द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी इज द अथॉरिटी विच डिसाइड्स कि जिन लोगों का डेटा डिस्क्लोज हुआ है उनको अब जाके बताना है कि नहीं. जिन लोगों का डेटा जो डेटा प्रिंसिपल है, जो पीपल यू एंड मी हु आर प्रोवाइडिंग आवर डेटा, इफ आवर डेटा इज बीइंग ब्रीच्ड, देन द डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी डिसाइड्स हाउ मच ऑफ दिस इंफॉर्मेशन इज टू बी गिवन टू अस. ठीक है. एंड इट सेज दैट this is going to be the same case for non-personal data, because like we saw before, that non-personal data has also been included in the data protection bill. Then finally, grievance redressal. It says that every single data fiduciary should have a grievance redressal mechanism. They should have a data protection officer or any sort of equivalent body. If it's a small fiduciary, then an equivalent officer, or if it's a big significant data fiduciary, then they definitely should have a data protection officer to whom you can go and give your complaints. If any of these compliances, any of these obligations are not being met, you can go ahead and register a complaint with these data protection officers, and they say that this complaint that you've registered should be resolved within 30 days. And in case you're not satisfied, or in case this is not done within 30 days, you can go ahead and directly approach the data protection authority itself. ठीक है. And then finally, it talks about third party processing. Third party processing का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को कंसेंट दिया है, किसी डेटा फिड्यूशरी को कंसेंट दिया है आपका डेटा प्रोसेस करने के लिए, and if the sort of processing that are doing is very complicated or very technologically advanced, then ये डेटा फिड्यूशरी क्या करेगा, आपका डेटा किसी एक ऐसे फर्म को देगा who specializes in that. So for example, if a data fiduciary is an aggregator, for example, Dr. Lal Path Labs. Now Dr. Lal Path Labs is taking your medical information, taking your blood samples and everything, but let's say Lal Path Labs themselves don't have the ability to process this the blood sample that you're given. तो ये किसी एक दूसरे
दूसरे डेटा प्रोसेसर को देंगे जो आपके सारा ब्लड सैंपल प्रोसेस करेंगे. वो इन्फॉर्मेशन वो डॉक्टर लाल पाथ लैब्स को देंगे एंड डॉक्टर लाल पाथ लैब्स आपको देगा, राइट? So in this case, in third party processing, the data protection bill says that this transfer of data to a data processor can only be done with a valid contract between the fiduciary and ये जो data processor है ये he can't keep going and giving you data further and further आगे, right? This also needs a consent. This needs a consent from the data fiduciary from your behalf. ऐसा तो नहीं होगा कि डेटा फिड्यूशरी ने एक डेटा प्रोसेसर को दिया, उसने किसी और को दिया, उसने किसी और को दिया. ऐसा नहीं हो सकता. एंड टू कट ऑफ दैट थर्ड पार्टी प्रोसेसिंग इज व्हाई दिस प्रोविजन इज गिवन, राइट? सो वी सॉर्ट ऑफ अंडरस्टूड the obligations that the data fiduciary has. Now let's understand what rights do we have as data principals, as people who are providing our data. So the first right is the right to confirmation and access. This is a very important right because इसी राइट से हमको पता चल रहा है कि मेरा जो इन्फॉर्मेशन लिया गया है ये प्रोसेस हो चुका है, ये प्रोसेस होने वाला है, कैसे प्रोसेस होने वाला है, क्या यूज़ होगा इसका मुझे समरी अगर चाहिए तो मुझे समरी दिया जाए, मुझे बताया तो जाए इसका हो क्या रहा है, राइट? सो आई हैव द राइट टू नो हाउ माई डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड, नॉट प्रोसेस्ड, टेकन, नॉट टेकन, कलेक्टेड, एवरीथिंग. So I as a data principal have this right to know, and this if I ask for the data fiduciary in written, they have to provide it to me, right? If I ask for this data, the data fiduciary has to provide this to me. अगर नहीं provide करेंगे तो हम ग्रीवांस रेड्रेसल पे जाएंगे या DPA के पास जाएंगे, ठीक है? And it also gives a very important small clause which says that if your data is being processed and tomorrow you don't want this data to be processed, but for some reason you are not there anymore, then before such a happening you can appoint a legal heir or a legal representative of you who can decide on your behalf that if your data needs to be deleted or forgotten in case you've passed away. So इसमें एक बहुत बढ़िया सा एक छोटा सा सब क्लॉज डाल दिया है उन्होंने. ये बोला है कि अगर मान लीजिए the data that is being processed. Now, data can be processed for numerous number of reasons, and it can be processed for a really long time. So, in that case, you can nominate someone जो आपके side से आपके ये decisions ले सकता है in case you have passed away. Very important provisions, right? So, and then, nominate legal heir and representative. Now we move on to the right to correction and eraser. Again, very important thing. अगर आपका डेटा कलेक्ट किया गया है एंड इट वाज कलेक्टेड इन अ पर्टिकुलर टाइम, देन चांसेस आर देयर कुड बी सम अपडेशन दैट इज नीडेड टू बी डन. कोई चीज़ें अपडेट हो गई होंगी, कोई चीज़ें चेंज हो गई होंगी आपके बारे में, कोई इन्फॉर्मेशन गलत कलेक्ट की गई होगी तो उसको करेक्ट करना है, कोई इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट की गई है तो उसको कंप्लीट करना है, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन जो अब ट्रू नहीं है उसको हटाना है. फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर वाज अ पॉइंट व्हेन इन्फॉर्मेशन वाज कलेक्टेड फ्रॉम यू बाय योर एम्प्लॉयर, and in one of those there was an FIR that you had to disclose, but later on that FIR was dropped, later on that whole case was dropped. Now in this case, अब ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉयर हमेशा वो डेटा ही रख लेगा अपने पास कि नहीं मेरे अगेंस्ट FIR किया गया था. There should be a provision where I can go ahead and erase this data. There should be a provision where I can update this data. So that's what the right to correction and eraser means, that that this fiduciary needs to, एक तो हमने पहले ही बोला था कि the data quality needs to be accurate. And in this case, the onus is also on us that we can go ahead and correct the data, erase the data or update the data. And also remember, once you update this data, it's the onus, the responsibility is on the data fiduciary that they have to go ahead and update this data with every other entity that they have shared your data with. उन्होंने जहाँ जहाँ आपका डेटा शेयर किया है या प्रोसेस किया है, जैसे ही आप अपडेट करते हैं ये उनका ऑब्लिगेशन है कि उनको जाके ये अपडेट करना है, ठीक है? देन comes right to data portability. Data portability का मतलब होता है कि अगर simple चीज portability, if your data is being used by one fiduciary, you can take that data and give it to another fiduciary, right? Now पहले क्या होता था, before the data protection bill came, there was a conflict of interest where एक डेटा फिड्यूशरी ये बोल देता था कि नहीं मेरे ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं, मैं कैसा डेटा प्रोसेस वगैरह करता हूँ, मैं नहीं चाहता उनको पता चले तो मैं नहीं करवा सकता. ये सारे प्रोविजंस वगैरह हटा दिया डेटा हमारे डेटा प्रोटेक्शन बिल ने. एंड उन्होंने ये बोला है कि ये जो डेटा ट्रांसफर है, ये दिस डेटा ट्रांसफर शुड बी डन एज लॉन्ग एज इट इज बीइंग डन इन अ लीगल वे. इट्स ऑल गुड, इट इज ऑल गुड as long as being done in a legal way and it has the consent of the person giving the data.
the data should be able to port it from one place to another, right? And comes the most important thing that we've always spoken about whenever it comes to right to privacy is the right to be forgotten. So right to be forgotten क्या है? Right to be forgotten is that you, if you believe for some reason, and the reasons are given below, for some reason that your data is not required by the data fiduciary anymore, then you have the right to restrict or prevent continued disclosure or processing of your own personal data. ये कब कर सकते हैं? जब the purpose is served or no longer necessary for the purpose. जब जिस पर्पस के लिए आपने अपना पर्सनल डेटा दिया था वो या तो हो चुका है या उसके लिए अब जरूरत नहीं है. In that case, you can ask them to delete your data. Then, if the consent on the basis of which this disclosure was made or such processing was being carried out has been withdrawn. पहले मैंने अग्री किया था एक कंपनी को मेरा डेटा देने के लिए, मैंने उनको अपना डेटा दिया, बट बाद में मैंने देखा ये कंपनी ना बड़े शेडी काम कर रही है, तो मैं अब अपना सारा डेटा विड्रॉ कर लेना चाहता हूँ इनसे, मैं एसोसिएट ही नहीं करना चाहता हूँ इनसे. इन दैट केस आई कैन अगेन, इफ आई हैव विड्रॉन माई कंसेंट, I can ask my right to be forgotten from this. I can ask them to delete my data completely. ठीक है? And then, if there was it was made contrary to the provisions of the data protection bill or any other law, which is the legal side of it, कि अगर जो data fiduciary जिन्होंने मेरा data collect किया है, मैंने उनको data दे भी दिया है, but they themselves are in contradictory to any other law or the data protection bill itself, in that case also I have the right to remove my data from there. ठीक है? अब इसमें जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है वो दो चीजें बोलता है. एक वो द फर्स्ट थिंग दैट सेज दैट राइट टू बी फॉरगॉटन should be able to override a person's right of freedom of speech or right to information. So the idea here is that your personal data is your own personal data, and in that case you have the overriding power over the freedom of speech or expression or the right to information of other people. That is the first case where the right to be forgotten can be given. And the second case where right to be forgotten can be given is the case where the data fiduciary themselves do not need it for the purpose. They themselves do not need it for any purpose that is being used. पहले जो purpose के लिए use किया जाता था, अगर उस purpose के लिए नहीं use किया जाएगा, then your right to be forgotten is going to override that purpose. And ये overlook कौन करेगा? Data Protection Authority. And उसी overlook में हम देखेंगे कि ये जो exercise of जो हमारे rights हैं, all these rights that are given, from other than right to be forgotten, the above mentioned rights may only be exercised upon request made in writing to the data fiduciary, either directly or through a consent manager. हमने बात करी थी consent manager के बारे में थोड़ा सा, कि consent manager, I'll just give you a brief idea of what a consent manager is. मान लीजिए आपको अपना information किसी एक entity को disclose करना है, ठीक है? तो आप एक कंसेंट मैनेजर को अप्रोच करेंगे. ये एक मिडिल मैन की तरह होंगे जो आपसे आपका डेटा के सारे कंसेंट्स लेंगे कि अगर आपके फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर इज एन इंश्योरेंस कंपनी एंड यू वांट टू प्रोवाइड योर पर्सनल इन्फॉर्मेशन बिकॉज यू आर बाइंग इंश्योरेंस फ्रॉम दिस कंपनी. सो यू आर गोइंग टू गो टू अ कंसेंट मैनेजर, यू आर गोइंग टू टेल देम कि मुझे इस कंपनी के इंश्योरेंस चाहिए. तो ये कंसेंट मैनेजर उस कंपनी से बात करेगा, इंश्योरेंस कंपनी से, और उनसे उनके सारे कंप्लाइंस लेगा कि आपको किस किस चीज़ का कंसेंट चाहिए बताइए मुझे. फिर ये कंसेंट मैनेजर आपसे आके वो कंसेंट लेगा एंड देन ये डेटा ट्रांसफर होगा. एंड कीप इन माइंड द कंसेंट मैनेजर कैन नॉट सी योर डेटा, दे आर ओनली हियर टू मैनेज द कंसेंट. इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि दे आर गोइंग टू स्ट्रीमलाइन गिविंग कंसेंट. दे विल ऑल्सो प्रोवाइड, कंसेंट मैनेजर्स आर ऑल्सो गोइंग टू फॉलो द होल प्राइवेसी बाय डिज़ाइन जो आर्किटेक्चर है, प्राइवेसी बाय डिज़ाइन जो हमने पहले बात की कि they are going to be this very strong, very secure, safeguarded entity which is going to take your data and going to keep your privacy in mind and then only transfer your data. So ये एक स्टैंडर्ड बन जाएगा. ये जो कंसेंट मैनेजर्स होंगे एक स्टैंडर्ड बना देंगे, एक गाइडलाइन बना देंगे कंसेंट्स के लिए, जिससे जिन लोगों ने कंसेंट मैनेजर के थ्रू आपसे कंसेंट लिया है उनका जो अथॉरिटी होगी, उनका जो ट्रस्ट फैक्टर होगा वो बहुत हाई होगा. इट्स गोइंग टू बी सिमिलर एज अ हॉलमार्क फॉर गोल्ड. So consent managers are going to be similar to what we have as a BIS hallmark standard. उसी तरह का होगा कि जितने भी data fiduciaries हैं who have approval from a consent managers are going to be good data fiduciaries, right? So this concludes our first conversation on
ऑन आवर डेटा प्रोटेक्शन बिल. अगले क्लास में हम जल्दी से बात कर लेंगे अबाउट डिफरेंट प्रोविजन व्हेन इट कम्स टू क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर ऑफ डेटा, about exemptions under the data protection bill, about the fines, about different obligations, ये data protection authority क्या होता है, and significant data fiduciaries कौन होते हैं. So stay tuned for the next video and I'll see you right there.